Okay, so we'll continue with our FM and specifically we'll continue our capital structure. This might be our last lecture on capital structure. Okay, so when we started capital structure, okay, we discussed few things that what actually is the value of the firm, correct? What is the value of equity? What is the value of debt? How the overall cost of capital, that is K or WACC, depends upon the value of the firm, correct? Then we went into theories. We went into theories of capital structure, which is the basic part of this. Okay, in in theories, we did 4. At first, we did NI approach, that is net income approach. Here, what we discussed that as debt will increase, our cost of debt will be constant, cost of equity will be constant, but our overall cost of capital will decrease, and thereby the value of the firm will increase. Correct? यही हमने सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच में बात की थी कि आप डेट, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के कंपोनेंट को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि डेट एक सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस। करेक्ट। तो जैसे आप डेट के ओवरऑल, आपको जितने सस्ती वाली चीजें आप बढ़ाओगे, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम जाएगी, और जब आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ने शुरू हो जाती है। करेक्ट। देन वी मूव ऑन टू आवर एनओआई अप्रोच। ओके, नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच। ओके, ये भी ड्यूरेंट की, दिस बोथ ऑफ दिस आर ड्यूरेंट थ्योरी। ओके, बट दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अलग अलग चीजें करती है। नेट ऑपरेटिंग क्या करती है? एज मोर डेट यू विल इंक्रीज, ओके, योर डेट विल रिमेन कांस्टेंट बट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होती है? क्या रीजन दिया था कि क्या होता है कि इंटरेस्ट का खर्चा इतना बढ़ जाता है कि इक्विटी वालों को रिस्क लगने लगता है। करेक्ट। तो जितना ये रिस्की होगा इक्विटी कैपिटल, उतना इसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो क्या होगा? लेकिन इसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी केडी तो कमती रहेगी ना, डेट आप बढ़ाओगे तो आपकी केडी कमती रहेगी। करेक्ट। अब इक्विटी बढ़ती रहेगी, ओवरऑल चीज पैरेलल पे आ जाएगी। जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि डेट बढ़ेगा, तो केडी आपका चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लेकिन इसमें वो बात नहीं, इसमें जितने से डेट कम हो रहा है उतने से इक्विटी आपकी बढ़ती जा रही है। करेक्ट। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वैल्यू ऑफ द फर्म पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Correct. These are the two theories of the Durant that we discussed. Then we discussed MM approach, Modigliani and Miller approach. Okay, where we read that KE and KD are independent of each other. Independent of each other. Independent of each other. They do not have any impact on overall cost of capital, neither do have the impact on value of the firm. Correct. इसमें हमने एक चीज और डिस्कस की थी, that here they are measuring the firms in two major perspective. करेक्ट। अगर याद ना हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होमोजीनियस होगा। ये देखिए ऊपर वाला लाइन, वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, और डेट इक्विटी मिक्स इज इररिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। करेक्ट। तो इसमें हमने क्या बात किया था? वी डिस्कस दैट देयर विल बी टू फॉर्म्स, दैट इज VU and VLU, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म एंड वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड फर्म में क्या होगा? डेट विल एग्जिट in unlevered form. We read that no debt component, only equity. But here both debt plus equity will be there. इसलिए इसका फॉर्मूला हम क्या करते थे? VU plus KD करते थे। Correct. This is all, these three theories we have done. We have discussed each of their examples as well. Okay. Now we'll move on to the last approach, that is the traditional approach. Okay. Today we'll start with
ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, इसको ना किसी फॉर्मूले से नहीं, एक कहानी से बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ी हुई थी, ये देखिए, यहाँ पे हमने स्टोरी पढ़ी हुई थी ड्यूरेंट थ्योरीज में। क्या पढ़ा हुआ था हमने? हमने पढ़ा हुआ था कि आपकी जो सस्ती चीज है, आप उसका कंपोनेंट बढ़ाओ, करेक्ट? तो उससे क्या होगी, आप महंगी चीज को कम लो तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि डेट एक सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस। करेक्ट। We have taken this example only to understand that increase the more cheaper thing in your capital structure so that your overall cost of capital goes down. Correct. Now, traditional approach says that when you are being smart, means you are trying to induce more of the least cost least cost source of finance into your capital structure. What automatically will happen? Your cost of equity will increase. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जितना ज्यादा हम डेट लेके आएंगे इक्विटी वालों को उतना ज्यादा रिस्क लगेगा, क्योंकि सबसे पहले इंटरेस्ट ही लेस होता है। करेक्ट। ईबीआईटी में से ईबीआईटी में से सबसे पहले इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट ही हटता है, फिर जाकर जो बचता है वो शेयर होल्डर्स की अर्निंग होती है, ईबीटी। तो जितना जितना हम डेट ले आएंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट का खर्चा आएगा। करेक्ट, उतना उनका ईबीटी कम हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि डेट आएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ईबीटी कम हो जाएगा, तो उनका रिस्क बढ़ेगा। जितना ही उनका रिस्क बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगी। सिर्फ यही नहीं, जब हम देखेंगे ना कि केडी सस्ते में मिल रहा है, तो जितना ज्यादा हम केडी ले आएंगे ना, हमको इंटरेस्ट भी उतना ही ज्यादा देना। समवेयर अदर और डेट विल ऑल्सो इंक्रीज। क्यों? आप एक चीज समझो, आज एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक ए टीचर है, एक बी टीचर है। करेक्ट। आप देख रहे हो ए भी अच्छा पढ़ाता है, बी भी अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, ए की कॉस्ट ज्यादा है, बी की कॉस्ट कम है। करेक्ट। तो आप बोलोगे जब दोनों बराबर ही है, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं, ऐसा नहीं कि ए बहुत अच्छा पढ़ाता है, बी एकदम अच्छा नहीं पढ़ाता। हो सकता है एक समवट थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हो, लेकिन आप देख रहे हो चीज एक ही है, दोनों डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ए का कॉस्ट ज्यादा है, बी की कॉस्ट कम है। तो आप कहाँ जाओगे? आप बी के पास ज्यादा जाने की कोशिश करोगे। करेक्ट, क्योंकि आपको सेम कंटेंट मिल रहा है कम प्राइस। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप, सिर्फ आप ही नहीं, ऐसे और भी कई लोग हैं जो ये सोचेंगे और बी के पास जाना शुरू करेंगे। तो जब बी देखेगा कि मेरा मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, तो आपको नहीं लगता बी अपने प्राइसेस इंक्रीज करने की सोचेगा? करेक्ट। जब जब लोग देखेंगे कि ये कंपनी डेट ज्यादा देना चाह रही है, डेट ज्यादा इशू कर रही है, तो आपको लगता है कि डेट लोग सस्ते में लेना चाहेंगे? नहीं, वो बोलेंगे मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट चाहिए। करेक्ट, आप इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट बढ़ाओ। तो जैसे इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट बढ़ गया, आगे क्या, आपकी केडी बढ़ गई और साथ ही साथ आपकी इक्विटी भी बढ़ गई। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको पहले। ये है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज माय डेट इक्विटी रेशियो। ओके, दिस इज माय cost of debt, this is my cost of equity, this is my overall cost of capital. Okay, it is very simple, just try to understand this diagram, everything will be very simple. Now see what actually is happening. As more and more debt you are employing, correct, see your cost of equity is also increasing a little bit, but at first your cost of overall cost of capital is coming down. Correct, your overall cost of capital is coming down, but as you become more smart, what you are doing, you are trying to indulge more and more cost of debt. So what is actually happening, your KD is also increasing a little bit. Okay, no matter, we know that cost of equity will increase as more and more debt will come, but see after a certain point of time, after this point of time, okay, after this point of time, see your overall cost of capital is also increasing. Why? Because both your KD and KEs are increasing after a certain period of time. Okay, so what
traditional approach says that see the traditional approach is saying that at a point where your Q is minimum, okay, and after that point it has started to increase. This point is your optimum capital structure. बताइए किसको किसको इसी से समझ में आ गया, किसको किसको और कुछ बताना पड़ा? एक बार सर ग्राफ बताइए ना, समझ में आया हमें, तब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, करेक्ट? तो हम पहले से जितनी थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये बोल रहा है कि डेट आप बढ़ाइए, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमता जाएगा, ठीक है। हाँ ये पॉइंट, ये भी पॉइंट है कि आपकी इक्विटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब जब तक मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमेगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। आपने सोचा कि थोड़ा और केडी लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा और कम आ जाए, लेकिन उसके साथ आपकी इक्विटी बढ़ गई और आपका डेट भी एक टाइम के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोग आपको खरीदना, जब लोग ये देख लेंगे ना कि आप लालची हो रहे हो, अब आप और खरीदना चाह रहे हो, तो उतने कम इंटरेस्ट में कोई नहीं लेना चाहे, वो बोलेंगे और इंटरेस्ट दो। जब आप इंटरेस्ट ज्यादा देना शुरू कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, केडी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और केई तो बढ़ ही रहा था। तो मुझे बताइए, जब केई और केडी दोनों बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, at that debt equity ratio where the overall cost of capital is minimum, and after that it tends to increase, that is your optimum capital structure. सर ये वैसे ही हो गया जैसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ते थे। हाँ नहीं, उससे मत मिलेगा, वो कंप्लीटली अलग चीज है, ये कंप्लीटली अलग चीज है। क्लियर है क्या सबको? आइडिया क्लियर है ना? अभी एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। आइडिया क्लियर हो गया। चलिए एक इलस्ट्रेशन मैं लिखता हूँ। ठीक है, this is an example where total capital requirement is 10 lakh, EBIT is 2 lakh, and following debt equity ratio is given. Debt is to equity 2:8, 3:7, 4:6, 6:4. ओके, नाउ विल सॉल्व दिस। और ये सॉल्व करके हमको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे ना, आपकी इक्विटी तो बढ़ेगी, देखिए इसी से समझ में आ रहा है, लेकिन आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म भी गिरनी शुरू हो जाएगी, ठीक। चल इसको देख नाउ। what are the different ratios? The different ratios are 2:8, 3:7, 4:6, 6:4. Okay. So if the requirement is 10 lakh, so here debt will be of 2 lakh and equity will be of 8 lakh. Correct.
3:7 means debt will be 3 lakh and equity will be 7 lakh. Debt will be 4 lakh and equity will be 6 lakh. Okay. Debt will be 6 lakh and equity will be 4 lakh. करेक्ट. अगर 10 लाख रिक्वायरमेंट है और रेशियो ये है तो इसी में डिवाइड होगा. इससे सब एग्री करते हैं. Yes, sir. चलो, let's bring out the EBIT. Now, EBIT is 2 lakh in each case. Okay, so first component will be interest. Okay, now interest, see, KD at first point it is 6%. Correct. तो 2 लाख का 6%. कैलकुलेटर लेके बैठिए कोई, मुझे बताते रहिएगा जब भी. 12,000. So 12,000. 12,000. ओके, अब 3 लाख का 6%. Sir, 18,000. 18,000. हाँ, 18,000. Sir, good. 18,000. 4 लाख का 6%. 24,000. 24,000. और 6 लाख का 7%. 42,000. 42,000. तो ये आ जाएगा 1 लाख 1,88,000. 88,000. 1 लाख 72,000. करेक्ट. नहीं, 1 लाख 82,000. सॉरी, 1 लाख 82,000. ओके, ये आ जाएगा 1 लाख 1,76,000. 76,000. और ये जाएगा 1 लाख 58,000. करेक्ट. देखिए दिस लगवा इज दिए माय, इसमें, दिस विल बी EBT. इसमें लगवा दिए, लेकिन वो भी सुंदर लग रहा है, खराब नहीं लग रुचि 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 माइक ऑन. सॉरी सॉरी सॉरी. Okay. So now our KE is given. KE is 15%, 15%, 16% and 24%. तो यहाँ से बताइए वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगी या नहीं? कैन वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी फ्रॉम हियर? इफ यस देन व्हाट? वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? Sir, value earning जो अवेलेबल होगा इक्विटी होल्डर का डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. करेक्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सो EBT बाई KE. करेक्ट. कितना आ रहा है बताते जाइए. 1,88,000 डिवाइडेड बाई 15%. सर 12,53,333. 53,333. Okay. 1,82,000 divided by 15%. So it's 12,13,333. Okay. 176, 16%. 11 lakh. Yes sir. पूरा 11 लाख. Yes, sir. Okay. 11 लाख. और उसके बाद 158 divided by 24%. 6,58,333.33. Okay. Now value at debt is known. Correct. Here it is 2 lakh. Here it is 3 lakh. Here it is 4 lakh. And here it is 6 lakh. करेक्ट. तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 14,53,333. यहाँ ऐड करेंगे तो 15,13,333. यहाँ ऐड करेंगे तो 15 लाख. और यहाँ ऐड करेंगे तो 12,58,333. करेक्ट. नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? चल, सॉरी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले हमको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ द फर्म. वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ, अरे यही तो निकालना.
ये क्या था, ये वैल्यू ऑफ फर्म था, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, करेक्ट। यहाँ से मैं क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकता हूँ? अगर हाँ तो कैसे? Sir, cost of equity plus cost of debt. कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, अरे नहीं, वो तो वेटेड एवरेज करना पड़ेगा ना उसके लिए। सर तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही तो निकलेगा। हाँ, उसके लिए वेटेड। आप ये फॉर्मूला क्यों नहीं बता पा रहे? EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, करिए कितना आ रहा है बताइए। 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख, 53,333। So 0.131374. वही मतलब 13.74. 13.776। ओके, गिव मी अ मिनट। तो मेरा 7.6 आया, 7.4। तो सेकंड का आ रहा है 13.215। हाँ बोलिए। सर सेकंड का आ रहा है 13.215, we can take it 13.22। 13.22%। ओके, नेक्स्ट वाले का। सर 13.33। 13.33। ओके, सर 15.40। 15.40%। Now see how the traditional approach holds good. See, at first, debt was minimum, correct? So overall cost of capital was 13.76. Okay, you increase the debt component and you'll see that your overall cost of capital has decreased a bit, correct? You increase more, so you'll see that overall cost of capital थोड़ा सा बढ़ा है, but it has increased, correct? यहाँ से increase. Now you have increased more debt now. So what actually happened? Your overall cost of capital increase हुआ ना? तो यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है? अगर मुझे ये एग्जांपल में बोलना हो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कौन सा बोलेंगे? This is the part we'll say that this is the optimum capital structure where the overall cost of capital is minimum, correct? This is the optimum capital structure. बताइए, क्लियर है? जो मैंने यहाँ ऊपर थ्योरी बताई वो यहाँ एग्जांपल से मैंने क्लियर करवा दिया कि देखिए वही हो रहा है। जैसे जैसे डेट हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़ेगा, ये हमने पहले देख लिया था, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक पॉइंट के बाद बढ़ता चला जाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच यही बोलता है कि आप डेट और इक्विटी का ऐसा ही मिक्स रखो ताकि आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, जो कि हमारे केस में 3:7 में आ रहा है कि 10 लाख रिक्वायरमेंट में देयर शुड बी 3 लाख ऑफ डेट एंड 7 लाख ऑफ इक्विटी, करेक्ट? एनी डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? Now we'll directly move on to the math illustrations and we'll finish up the chapter. Okay, so we'll start with illustration 26. Okay, just pause the video once, read the question, and then come back to the lecture again. Okay, so here actually we have to find out over weighted average cost of capital. First, we have to calculate, and then we have to calculate the total market value of the firm under NI approach. So under NI approach, what is the value of firm? Value of firm, that is VF, is equal to value of equity, correct? VE plus value of debt, that is VD, correct? But let's first start with the weighted average cost of capital.
Calculation of weightage average cost of capital is key. So there are forms X, Y, Z, W. X, Y, Z, and W. ऐसा लिखते हैं W. W. Okay. So at first, EBIT. Okay. EBIT is 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh, 6 lakh. 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh, 6 lakh. Now interest 20,000, 60,000, 2 lakh, 2 lakh 40. Everything is given. Less interest. 20,000, 60,000, 2 lakh, 2 lakh 40,000. 2 lakh, 2 lakh 40,000. What is EBT now? So 1,80,000, EBT is 180, 240, 2,40,000, 3 lakh and 3,60,000. अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? सबसे पहले माइनस करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे हम के ही लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी हियर ओनली के इज गिवन. ओके, तो इस के से क्या 12% क्या समझें? ये के क्या है? cost of equity. एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, के क्योंकि यहाँ दिया हुआ इक्विटी कैपिटलाइजेशन बिलो. ओके, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, ये भी दिया हुआ. So 12%, 16%, 15%, 18%. 12%, 16%, 18, 15%, 18%. तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? वी ई मिल जाएगा. करेक्ट. वी ई इज Value of equity. EBT बाई के. बताइए कितना कितना आ रहा है? 15 lakh, 15 लाख. इसका भी सिर्फ 15 lakh. ओके, 15 लाख. तब तो ये दोनों भी सेम ही आना चाहिए. 15 नहीं, बाई 20, हाँ 20 20 लाख. lakh 20. और 18 इंटू 36. इक्विटी मिल गया. Yes, sir. ओके, नाउ वैल्यू ऑफ डेट भी निकालना 2 पड़ेगा lakh, बिकॉज 6 lakh. where 2 lakhs 6 No. not given. But see, you can calculate the value. Why? Interest rate is given and amount of interest is given. तो इससे हम निकाल सकते हैं कि नहीं वैल्यू ऑफ डेट? So we can do Interest by cost of debt. correct. Value of debt is equal to interest by Cost of debt. cost of debt. अब देखिए इंटरेस्ट है पहले केस में 20,000, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या करेंगे बताइए? 10%, that is 2 lakh. 2 लाख. तो कितना आया पहले केस में वैल्यू ऑफ डेट? दिस इज 2 आई मैं राइट 2 इट lakh इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय K2, 2 KD. लाख. ओके, इस केस में 60,000 बाई 10%, 6 लाख. Yes, sir. ओके, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10% मीन्स 20 लाख. 20 lakh. और 2 लाख 40 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 2 lakh 40, 24 lakh. 24. Okay, so now we can find out the value of firm by VE plus VD, and this was the requirement of question. Yes, sir. 17 lakh, 21 lakh, 21 lakh, 40 lakh, 44 lakh. 44, 44. But we have to calculate WACC as well. तो Yes, WACC sir. क्या करेंगे? EBIT EBIT by value of
value of Correct. firm. Correct. EBIT by value of firm. बता दीजिए किसका कितना कितना है 2 लाख बाई सर फर्स्ट का 11.764 चलिए 76%. can run it 14.19 14.19%. सर 12.5%. 12.5 नहीं 50 बोलते हैं 50%. Okay. And 13.60%. 13.6 13.6363 आ रहा था सर. We can 6360 to write 64 64. Yeah. 6 done and dusted. Nothing was there in the question. Correct. The value of firm is there. We have already calculated it. जाने दीजिए आप लिखने की जरूरत है मैं नीचे ऑलरेडी लिख दिया इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला में मैंने डाला हुआ ओके सो दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट ओके ये इक्विटी कैसे निकलती है ओके ये डेट कैसे निकलता है ओके वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलता है दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स okay I will see another question okay let's see illustration 27 the existing capital structure of XYZ Limited is as under equity shares of 100 each 40 lakh retained earning 10 lakh 9% preference shares 25 lakh 7% debentures 25 lakh the existing return on company's capital is 12%. What is this 12% return on capital okay and income tax rate is 50%. The company requires a sum of 25 lakh to finance an expansion program for which it is considering the following alternatives. Issue 20,000 equity shares at a premium of 25 per share. Issue 10% preference shares, issue 8% debentures. So these all are 3 different cases. It is estimated that PU ratio in the cases of equity, preference and debentures finance will be 20, 70, 60 respectively. ये क्या है 20, 70, 60? ट्राई करना चाहेगा क्या है ये पीई रेशियो दे रखा 20, The 70 profit earning ratio. profit earning ratio 20, 70, 16 respectively. Which of the above alternatives would you consider to be the best? The one with the highest market price per share will be the best alternative for us. So there are 3 plans. So we have to make 3 different colors. Go to the next page. There will be 3 different plans. Okay. There will be plan 1. There will be plan 2 and there will be plan 3. In one there are only equity. Plan 2 there is only preference shares. In plan 3 there will be debentures. Okay, now EBIT is given or not. ये EBIT कैसे निकले जो ये बता देगा मैं समझ जाऊंगा समझ में आ रहा है कोई क्या ये बता सकता है EBIT कितना आएगा
ये सर नहीं आ रही है, सर थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की, ये टोटल करेंगे तो टोटल कैपिटल पता चल जाएगा, ठीक है, और रिटर्न यस ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो ईबीआईटी क्या होता है? कितना आ रहा है ईबीआईटी फिर? 12 लाख। 12 लाख। ये ऐड करके किया ना आपने? यस सर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अरे 12 लाख कैसे आता है? 15 लाख आता है। आपने क्या सिर्फ यही लिया, इसको नहीं जोड़ा? हम नहीं, इसके उसको नहीं हम जोड़ा नहीं, सर। इसको भी जो हम इसको इस ये प्लान निकाल रहे हैं ना, वी आर वर्किंग आउट फॉर दिस प्लान, सो वट एवर प्लान्स वी आर टेकिंग वी आर कंसिडरिंग दिस होल अमाउंट प्लस दिस बोथ। अमाउंट इस, यस सर। हाँ इस पे 12%, ठीक है, 15 लाख। 125 लाख पे। तो ईबीआईटी सर, कैसे निकला? 15 लाख। मैं लिख देता हूँ, ईबीआईटी इज इक्वल टू 40 लाख प्लस 10 लाख प्लस 25 लाख प्लस 25 लाख प्लस 25 लाख, विच इज एक्सपेंशन, ठीक है। ये आएगा 125 लाख इंटू 12% इक्वल टू 15 लाख, करेक्ट। जब हम प्लान 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब इसको कंसिडर करके अब करेंगे, ओके। तो ईबीआईटी इज 15 लाख। 15 lakh. At first, there will be less interest. Okay, now see, 7%, correct? 7%. तो बट यहाँ 8% डिवेंचर भी जाएगा 25 लाख का, ओके। सो फॉर ईच केसेस इट विल बी 7% ऑफ 25 लाख, बट फॉर द सेकेंड केस इट विल बी 7% ऑन 50 लाख। तो हम मौका पे उसको डांट भी देते, मुझे नहीं है। रुचि माइक, चलिए इंटरेस्ट बताइए, एग्जिस्टिंग का पहले बताइए और सर, फिर 1,75,000। एडिशन। 1 लाख 75,000। 25,000 कैसे होगा? 75 सर, नॉट 25। 75,000, हाँ, 1,75,000. Here also, here also. In fact, here as well. पर additional वाला here there is additional debenture of 25 lakh. तो 25 लाख पे भी 7% देना पड़ेगा। कितना आ रहा है? So 25 lakh is 7% additional. Oh, sorry, here it will be 8%. Sorry, here it will be 8%. 8%. 25 into 8%, it's 2 lakh. So 2 lakh. 2 लाख। So we have to deduct all this. Okay. So whatever will be left will be 13,25,000. EBT. 13,25,000. Learn from my mistakes. Okay. 13 lakh There will be 25,000. 11,25,000. Okay. Yes, Tax component is also given. So tax will also be deducted. So tax is of 50%. 50%. 50%। 50%. So EBIT minus tax at the rate 50%. So 1325 का हो जाएगा 662 6,62,500. 500. 662 500. इसका भी 662 500.
but here it will be 562 500. 562. Yes. Okay, अभी आ जाएगा प्रेफरेंस के लिए पैट, कितना आ रहा है? ये तो 662 500 ही आएगा, ये भी 662 500 ही आएगा, ये भी 562 500 ही आएगा. Correct. Now from here we'll first distribute preference dividend, existing और additional. Why? Because second case में सिर्फ preference dividend ही. So existing one will be 9%, but new one will be 10%. So 9% of 25. Correct? 25 था? 25. कितना आ रहा है बताइए? 2,25,000. 2,25,000. 2,25,000. 2,25,000. और एडिशन में यहाँ 25 पे 10% मीन्स 2.5 लाख. 2,50,000. Yes, sir. कितना बचता? अब जो बचेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल इट. एडिशनल में से इसका 10% जाएगा ना, 2,50,000 हाँ हाँ 25 लाख हाँ, का 10%. 25 लाख का 10%, 2,50,000. ओके. तो अब जो बचेगा ये होगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और इक्विटी अर्निंग. 4,37,500. इक्विटी अर्निंग्स 4,37,500 37,000. और उसके और बाद सर वो 1,87,500. 7,500, एक मिनट सर. 3,37,500. 3,37,500. Now equity earnings is there. If you divide it by number of equity shares, then we'll be done. Correct. Yes. So here also, here will be existing and additional. Existing is 40,000. Yes, In sir. each case, Yes, sir. where here in addition 20,000 will be there. Correct. तो इससे Yes, मुझे sir. क्या मिल जाएगा? I can find out EPS. How? Earning per share. Equity earning Equity earning divided by number of divided equity by share. number of equity share. Correct. So 437,500 divided by 60 is 7.29. 7.29. 40,000 divided by, sorry, 187,500 divided by 40. ओके, आप लोग क्या करिएगा ना, इसके 4.68. पीछे आप लोग क्या करिएगा ना, यहाँ पे ना नंबर दीजिएगा 1 2 करके. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो भी नंबर यहाँ रहेगा उसको माइंड डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा. ठीक है, मेरा वाला गंदा लग रहा है देखने में. अच्छा बताइए कितना सर है? 4.68. 4.687 at 69 we can write. 6869. Yes. थर्ड वन 8.44. 8.44. Okay. Now PE ratio is given. Yes, sir. PE ratio is given 20, 17 and 16 is given. 20, 17 17, and 16. 16. Now can we find out the market price? Yes, sir. कैसे? सर अर्निंग पर शेयर को पी रेशियो जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन फाइंड द Correct, मार्केट प्राइस पर correct, शेयर. correct, correct. So it will be 14.80. 145.8. 145.80. इसका 79.73. 19.73. इसका 135.04. 135.0. Now which one has to be taken? I leave in on your behalf. The plan 2. So here we have done EPS into ओके. कुछ नहीं था इसमें भी. सर एक जगह आपने गलत लिखा है. कहाँ बताइए? वो 5,62,500.
नीचे में आपने नहीं लिखा, पैट वाले में, पैट वाले में, डिबेंचर वाले में। अच्छा, ये फिगर गलत लिखा था। हाँ, 562 500। थैंक यू। Okay, I pick up another sum for discussion. Okay, so we'll see illustration 32, and with this we'll end our chapter. Okay, there might be three, 4 illustrations which I have left. Just go through it once. In case of doubt, reach out to me. Okay, so let's see this illustration. A company's current operating income is 4 lakh. The firm has 10 lakh debt of 10 lakh of 10% debt outstanding. Its cost of equity capitalization is estimated to be 15%. Okay, determine the current value of the firm using traditional value approach. Calculate the firm's overall capitalization ratio. Leverage we have not done, so we'll not see that part of the question. So let's start with the solution. Here also value of firm is equal to value of equity plus value of debt. This will never ever change. Okay, so at first EBIT is of 4 lakh. चलिए आप लोग बताइए, मैं करता रहूंगा. सबसे पहले क्या माइनस करूं? सर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट. कितना इंटरेस्ट? 10 लाख का 10%, दैट इज 1 लाख. चलिए, ये क्या आ गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विटी अर्निंग. इक्विटी अर्निंग्स. क्यों? क्योंकि हम अब थ्योरी वाला सम कर रहे हैं. यस. इक्विटी अर्निंग्स, वहां पे कभी हम पीएटी नहीं बोलते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देते. अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिख लेते हैं 15%. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ निकालेंगे. इक्विटी 20 लाख. ईबीटी बाई के, इसी को हम लोग ईबीटी बोलते हैं. करेक्ट. तो कितना आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी? तो 20 लाख. 20 लाख. अब क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ डेट सर हमको वैल्यू ऑफ पता है, डेट 10 10 लाख लाख. पता है. तो क्या वैल्यू निकालना ऑफ है? और वैल्यू ऑफ फॉर्म 30 बीई लाख. plus VD. Remember, wherever in the exam you will write V and VD, na, always at the end give notes that V you mean to say this, VD you mean to say that. Otherwise, I'm not very sure your marks might be deducted. So it will be 30 lakh. So overall, current value of the firm, we got it. Okay. Now I have to also find out firm's overall capitalization ratio. Nothing. We have to find out KO. Now what is KO? सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी, हाँ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. EBIT divided by EBIT by value value of value of firm. So EBIT is 4 lakh. Value of the firm is 30 lakh. 30 lakh. Into multiply by 100 to get it percentage. कितना आ जाएगा? 13.33%. 13.33%. Okay. So see that what actually is important over here. You should know the कि approach क्या बोलना चाह रही है. ठीक है. Each approach is trying to say what. Okay. And rest formula remains same everywhere. Correct. Formula में कभी कोई बदलाव नहीं है. सिर्फ हर एक थ्योरीज का अलग अपना सोचने का तरीका है. कुछ सबके अपने अपने assumptions है. And I'm again repeating is assumptions are very important from exam point of view. Okay. FM paper is set in such a way that I cannot even guess कि कहाँ से क्या आ सकता. You cannot even imagine. After seeing last term paper, I cannot take 1% risk also. So give your best into it. Okay, so with this we complete our capital structure. Our next chapter will be dividend policy. It will be more of a theoretical subject rather than a practical. Practicality is there, but it will be more theoretical, towards more theory. Okay, so for today we'll keep it up to here. In the next session, we'll start dividend policy. Till then, bye-bye. Have a great day. Whatever the illustrations I have skipped in between, okay, go through those all, and in case of doubt,
revert back. Thank you everyone. Have a great day.